Okay, so I think the sound is coming. Can you hear me? Okay, yeah. Hello everyone. So today is 31st of October, and yes, as we discussed in the last video, that is, we clearly discussed that when everyone was seeing the put buying, so when everyone was indicating that this data was like for the put buying, so then we concluded that this is not exactly put buying. Okay, so this is just to hedge the positions of the futures, and I mean the futures long that they are building. तो फ्यूचर्स लॉन्ग के लिए ये हेज किया गया था, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आ जाए तो आई मीन द पुट बाइंग विल सेव देयर पोजीशंस फ्रॉम लॉस. ओके, एंड एज वेल एज कुछ पुट शॉर्ट्स भी किया था. सो दे हैव डन सम माइन्यूट पुट, नॉट माइन्यूट लाइक सो सम अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग. So that also they basically hedged with these put buying. Okay, and we clearly told that we will analyze the fresh positions, but don't actually like take these as put buying positions, right? So that was what we discussed in the last video, correct? So do you remember? If you don't remember, just go and check, because everyone in the market was bearish due to this data. Okay, and clearly also we went for put shorts. Also we went for positional put shorts on Friday as well. So I did put writing at 17,700. So here 17,700, and as well as I showed you that I closed my position. So I shorted it at 88 and closed it at 25. Okay, so the thing is that yes, today also we went positional put writing. So as you can see here, and let's discuss from the morning. So morning, in the very first hour, those who did for put writing positions on Friday, so they were profitable. And then 9:26 a.m. put writing at 18,000. Okay, so 9:26 a.m. the first OI data comes at 9:18. Then the next OI data comes after 3 minutes. Okay, so that is at 9:21, and third data comes at 9:24. So looking at these three data, I concluded that yes, put writing was going on. And even if you see that Nifty score here, after that it started jumping. So now here the main thing was Nifty score was looking bullish, but Bank Nifty score was not looking that great. Okay, and exactly that showed up in the charts. तो मतलब हम लोग को वही देखने को मिला कि मतलब निफ्टी में थोड़ा भी मतलब जितना भी स्ट्रेंथ था, लेकिन बैंक निफ्टी पहले नीचे ही गया था. तो यस, बैंक निफ्टी फर्स्ट वेंट डाउन, बट द गुड थिंग वाज दैट मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि just check if Bank Nifty is above 41,000. So if Bank Nifty is above 41,000, then it's clearly like we are almost safe. Okay, because we can expect that a huge fall won't come. That I clearly stated. So the thing was that last day closing of Bank Nifty was not above this level. So that was one of the sign. But yes, today it opened gap up, and it stayed above 41,000, and so it was a good sign. Okay, so but yes, first it showed weakness, and after that you can see here the scores here. The scores started recovering here, and finally Bank Nifty was showing strength. Okay,
And yes, so that's the thing. So that's how we got to know that for Nifty put writing was going on, and at 18,000 put writing was going on. Now let's come to step by step. So yeah, Skadosh and Lokesh, hi. So yeah, I'll be coming to your questions. So others, if you also have any questions, you can post. Write it in the chat box. Yeah. So then these were the updates, and so then you see that those who did call buying exactly at 17,970, I told them to close, and from there again market started reversing, coming down. Okay, so from here onwards you can see it went to 19,000 I think 72, so we closed at 70. Okay, so that's the thing. And again when it went up here, I closed my put short positions, because again there would be some resistance, because 18,000 would be as I told you that this would be working as a resistance for some time. So yes, it was working as resistance, and in futures long positions were building up. So not only we identified the put writing positions, we identified 10-15 AM futures long. Okay, so we also identified the futures long positions that were getting built up in futures. And Bank Nifty, yes, that was mostly being done in Nifty, but Bank Nifty में उतना कुछ futures में अभी तक position नहीं बनाया गया है. So not much activity in Bank Nifty futures. Okay, and yes, and again here, just before crossing 18,000, again there would be some resistance, and again that happened at around here. Again, as you can see, after 12 it again came down. Okay, because there should be like this was one of the attempts, and in the very first attempt it will cross 18,000. That was not expected, and that's why at around this region I even closed my put shorts, and I was waiting for a dip, but it did not dip much. But yes, I was expecting that. Why I told even on Twitter that I'll take some positional put shorts. So that's why I was waiting. But when it started reversing from here, then I took the put writing positions, because then I knew that yes, now things are going to go up finally, because the put writers are waiting for a very long time. From the morning they did put writing at 18,000, and the 18,000 put writers, their average price is at 129. Okay, so the price here went till 124. I was just waiting to touch it at 129, but it did not. So then after it went up, so the price went till 124, I remember. So morning I captured their average price, so that was 129. Okay, so yeah, and from 124 again they just, took it up, because otherwise a little more down, so they would be in a loss with the huge put writing positions. And yes, and now also finally, like we were like here also at 1435, not even before crossing 18,000, I told that there are only two possibilities. Okay, so the thing is that either it will cross 18,000 today, or there will be a gap up tomorrow. So either way it's going to go above 18,000. नीचे जाने का कोई scene नहीं था. ठीक है. So and finally we went for positional put writing. And Twitter for members, you were also, so those who follow me on Twitter, so they were also identified, so they were also updated. Okay. Okay, yeah, I'm coming to the questions, Lokesh. Yes, so now let me tell you something. Here there was a learning tweet. Yes, so you can go very well and see here. Twitter members, you got to know this even during the live market hours. Even if you say that this telegram is fake, whatever, these screenshots are fake, at least
put writing has been done at 18,000. That was updated on Twitter during the live market hours. Okay, here. So not I mean in the fresh early morning when members were updated, but later on you were updated. And here also, as you can see in this update, you can see that futures long positions have been done in Nifty. Okay, so this update was also given during the market hours. You can go and check the time of these tweets, and then the learning tweet that I clearly showed you. I mean live I showed you that how to identify when both the sides you see that positions are building up at 18,000. I mean when I was posting this, the OI change was 28.7 lakhs. Okay, but in the middle it went more than 30 lakhs on the call side. So almost 48 lakhs OI change on the put side and 30 lakhs OI change on the call side. Okay, so those who were bearish would obviously go for those call writing positions, right? But with volume you can clearly understand that Nifty was paused for a moment, like at these below 18,000, just because they could exchange these call writing positions with other players, or mostly the retail players. Okay, so that's the thing I clearly showed you, that the positions on the put side, that was volume supported. Okay, so volume was less. So here it's not like the cash market that if volume is greater then it's good. So here you have to understand like what is volume, how is volume calculated here. So volume is like always an increasing thing here. So it's the number of contracts traded. Okay, so अगर आप एक contract open करते हो, volume will increase by 1. अगर आप एक contract end करते हो, then also even the same contract you are ending, then also volume would increase by 1. Okay, so it's an always increasing thing. But suppose exchange of positions is happening, so then what will happen is volume will increase, but the change in OI will remain the same or almost like the same, not increase. Okay, so that was the thing here. That is I clearly showed you that the call writing positions, they by the big players, they were getting exchanged. Okay, and you should stay with the put writing positions. Okay, so even if you just go and check this tweet, when was the time? So it was at around 1:36 p.m. Still then Nifty was down. Okay, so 136, so 136, yeah. So this is a 5 minutes chart. So this candle you can think, so Nifty was at around 17,964. okay, almost around that. तो ओके, तो यही है कि मतलब देखिए कि मतलब आपको इतना कुछ चेक करना पड़ता है कि कहाँ कौन सा पोजीशंस बन रहा है, क्या हो रहा है. तो दैट इज द थिंग दैट लाइक our indicators takes care of, and then also I just check some of the data by myself. And yes, let's go to the end of the day data. End of the day data also you will see that what we analyzed during the market hours, exactly that futures long has happened. Okay, futures short closing, and here if you see that in options put shorts, so a huge amount of put shorts has been done by the big players. Okay, so the FII especially, and even like you would see the prop decks, they have also done a huge amount of put writing positions. So these are till at 18,000. okay, the put writing positions. And here I mean if you go and look at the option chain data, so option chain data of FIIs shows that they have not been able to totally close their positions. Okay, and yes, so but the thing is that they have hedged it with some call buying positions. Okay, so they have made some call buying positions, so don't just they have been able to close some positions, and some call buying they have done. Okay, because they haven't been totally like able to close those positions. So when market goes up, so these call buying positions would minimize the loss for these call writing positions. Okay, and the thing is that yes, some call buying has been done at 18,000 as well. And here
if you look at the put long positions, so the put long positions are just for the hedging. So because you have futures long as well as huge put writing positions, so it's totally for the hedging purpose. So overall, what we can say is that futures long positions and the put writing positions, they are the most dominant ones today. So market is looking bullish, but how long or till where would be the next level? So for that, let's go to the 1-day chart. Okay, so here if you see that at 18,084 और 18,090, तो उसके आसपास एक रेजिस्टेंस है. देखिए इधर रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है. ये 3 दिनों, मतलब ये जो 3 दिन आप देख रहे हैं, ये 1-डे चार्ट है. तो ये 3 दिन एकदम उधर जाके ही मतलब रिवर्स किया था, ठीक है. तो यस, इट हैड गॉट सम रेजिस्टेंस देयर. अगर आप पहले भी देखोगे तो इधर भी 2 दिन आप देखो तो मतलब रेजिस्टेंस मिला था. सो this level is an important level. So here also you can see that it got resistance here. So if this is taken down, if this level is taken down, then we are going to look for all-time high as our next resistance, and then Nifty can touch all-time high. But for now this level could act as resistance because the you see that the FIIs, they haven't been totally able to close their call writing position. So for a temporary moment, yes, some resistance could be seen at that level, 18,100 or 18,090. but still कल देखेंगे कि नया positions क्या बन रहा है. जैसे मतलब जो फ्राइडे को जो पुट बाइंग पोजीशन था, तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मंडे को देखेंगे कि नया क्या पोजीशन बन रहा है. तो दैट विल डिसाइड, आई मीन, वेदर दोज put buying positions are were exactly for hedging. So still there was some probability that the market could be taken down, but that probability came to zero when we just analyzed that आज morning में put writing positions 18,000 पे हो रहा था, ठीक है. तो मतलब एनालिसिस और स्ट्रांग हो जाता है. ऐसे मतलब ऐसे कुछ नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में मत कुछ analysis कर लिया and you stick to that. If you stick to that, then anytime data can change and anything can happen. So you always have to flow with the data, and that's the way to survive here. Okay, so हाँ, तो निफ्टी का इधर रेजिस्टेंस मिलेगा. अगर नहीं मिला तो मतलब अगर ये क्रॉस कर गया तो then we are going for all time high for our next resistance level. एंड द थिंग इज दैट येस, अगर मैंने जो पुट राइटिंग पोजीशंस लिया है, तो जब मार्केट अगर इसके करीब आ जाता है, सो एज यू कैन सी फॉर नाउ एक्सजेएक्स निफ्टी इज एट अराउंड दैट लेवल. येस, नो, so yes, XGX Nifty has crossed 18,100 and it's at high, it took high at 18,116. so चलिए देखते हैं कल क्या होता है. तो मैं जो पहला चीज़ होगा कि मेरा मतलब अगर इधर टच किया तो मतलब 18,090 I'll be closing until unless huge put writing position starts at 18,100. but और एक भी डेटा है जो bullish signal दे रहा है, that is the I mean cash buying. So cash buying has been heavily done by the FIIs for the past few days, but ये DIIs लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है. तो देखते हैं कि क्या होता है. तो लेकिन आज एक हेवी बाइंग था, तो शायद कल फिर से गैप अप होने मतलब हो सकता है. तो देखते हैं. और बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं. सो फॉर बैंक निफ्टी आप देखिए कि इधर एक रेजिस्टेंस जोन है, दैट इज अराउंड 41,503. तो इधर आके देखिए बहुत दिनों से मतलब इधर रेजिस्टेंस मिला है. सो 41,500 वुड बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. अगर ये तोड़ देता है फिर बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, सो दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल. ओके, सो बैंक निफ्टी जब तक ये 41,000 के ऊपर है, वी आर सेफ टू शॉर्ट बिलो 41,000, डू पुट शॉर्ट्स बिलो 41,000 और एट 41,000 लेवल. Okay,
and if you want to go a little higher, then go for these today's low. Okay, so today's low is at around 41,100 पकड़ लेते हैं, तो 41,100 you can short because मतलब आज कुछ बाइंग किया गया है, तो देखते हैं कि मतलब आज का लो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, तो यही है कि मतलब 41,000 would be safe और 41,100 that would be the level to go for put writing in बैंक निफ्टी. हाँ, और जो कॉल बायर्स है या ऑप्शन बायर्स है, सो प्लीज़ अगर कल इधर मार्केट ओपन होता है तो सुबह no don't do any option buying, okay, because after that wait for this level either to break or to act as resistance. Okay, so you have to patiently wait, otherwise here for option buyers there won't be any trade. Okay, so that's the thing for the option buyers. और ये अगर टूट जाता है तो then we'll see for option buying opportunity, but now we have these futures long and put short opportunities. Okay, so yes, I think that's the thing. So अगर आपको मतलब आज इधर कुछ लर्निंग मिला है या कुछ आप लोगों को लाइव मार्केट में जाने को मिला है, तो मतलब ये जो अपडेट था, तो ये तो मतलब एकदम आप लोगों को मतलब दिखा दिया था कि 18,000 पे कॉल राइटर्स भाग रहे हैं और पुट राइटर्स है तो ऊपर जाने वाला है. तो उसके बाद एकदम एक वही हुआ, तो उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया. तो ये एनालिसिस के लिए मतलब एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, इट विल गिव मी एनर्जी टू डू सच पोस्ट इन द फ्यूचर्स ऑल्सो. तो देखिए मतलब बहुत पहले आप लोगों को मतलब ये अपडेट दे दिया था कि तो मतलब आप लोगों के पास बहुत टाइम था पोजीशन लेने के लिए. 136, तो 136 पे इधर था मार्केट, तो उसके बाद मतलब एक 50 पॉइंट्स का तो अप मूव आप लोग को देखने को मिला और कल और भी देखने को मिलेगा. तो यही है कि हाँ मतलब लाइव इंट्राडे में हम लोग फ्यूचर्स लॉन्ग और पुट राइटिंग हुआ है, तो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, ट्विटर में भी पोस्ट कर दिए थे. तो इसके लिए एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लर्न एनीथिंग. येस, नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चंस एंड येस. Skadosh, FIIs may have bought and DIIs have sold, but if you see the volume, this move is not convincing even if we have closed the highest ever in a month. But your call shots exchange analysis was spot on. Yeah, thanks for in the afternoon during the live market, superb. Yeah, so yes, I mean, Skadosh, you are a member, so you get live updates, so you know. So from the morning, like I mean, each and आज मतलब मॉर्निंग से थोड़ा मतलब प्रेडिक्शन थोड़ा आज मतलब ज़्यादा ही अच्छा चला गया था. तो मतलब इधर जाके जो भी कॉल बायस था, तो मैं एग्जैक्ट जाके 970 पे बोला कि क्लोज करो, और उसके बाद रिवर्स कर गया. और फिर इधर जाके जब मैंने बोला स्लोली ऊपर जा रहा है, तो फिर इधर ही जाके मतलब फिर से मैंने बोला कि फिर से ये नीचे जाने वाला है. और मतलब ये जो कितना बजे था वो जस्ट बिफोर टचिंग ये 12:04, तो 12 बजे मैंने फिर से बोला कि अभी फिर से नीचे जाएगा. ठीक है, तो इधर 12 बज रहा है कहाँ, हाँ इधर. तो ये कैंडल देखिए कि मतलब ऑलमोस्ट फिर से एक मतलब हाई बनाया था और उसके बाद फिर से नीचे चला गया. और इधर जाके फिर मैंने फाइनली ट्विटर पे अपडेट दिया कि देखो भाई 18,000 का कॉल राइटर्स भाग रहा है और फिर पुट राइटर्स प्रेजेंट है. तो और उसके बाद फिर से ऊपर चला गया, इधर से रिवर्स कर गया. मतलब आज थोड़ा ज़्यादा ही मतलब प्रेडिक्शन काम कर गया. तो यही है मतलब चलिए देखते हैं कि क्या होता है. तो कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ इंडिकेटर्स का हेल्प था. Yes, Lokesh, hi. How did you conclude that 921 it was put writing? So 921 or 926, I think 926. Yes, so how did I conclude that put writing was happening? So the first thing is that मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब पुट राइटिंग होता है तो आप लोग चेक कीजिए कि मतलब आईवी क्या हो रहा है. ठीक है, तो इट शुड, आई मीन द आईवी शुड डिक्रीज. ओके,
तो IV डिक्रीज हुआ था, दैट वाज वन साइन. एंड यस, ये जो 926 में था, तो मतलब निफ्टी का स्कोर ये मतलब मैं बैकएंड में जो चेक कर रहा था, जो लाइव डेटा था, तो इधर मतलब ये 927 में जाके अपडेट हुआ है, लेकिन मैं बैकएंड में ऑलरेडी मतलब डेटा को चेक कर लिया था कि मतलब बाय जो 3 वाई डेटा मिला था 920, 918, 921 एंड 924, तो उधर एकदम मतलब प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया था. मतलब जस्ट गो एंड चेक 18,000 प्रीमियम during 918, 921 and 924 when the NSE sends live OI data. Okay, so then check the premium, check the OI, check your IV, you will get to know. Okay, and even the indicators also gave the signal from 927. So that's how I identified the put writing positions at 18,000 in the morning. Okay, hi Krishna, sir, get real analysis today. Thanks sir. Krishna, I did not understand your query. Okay, so यही है कि मतलब ऑप्शन बायस कल मतलब आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए कि मुझे जो लग रहा है कि मतलब यही मतलब रेजिस्टेंस जोन पे आके मतलब ये ओपन होने वाला है. तो 18 अगर फ्लैट ओपन होता है तो देन देयर इज अ नाइस चांस फॉर ऑप्शन बायर्स टू गो लॉन्ग. ओके, बट द थिंग इज दैट मुझे जो लग रहा है कि एक्सजेक्स निफ्टी भी जो बता रहा है, तो कल सुबह देखते हैं एक बार क्या एक्सजेक्स निफ्टी कहाँ रहता है. और जो अभी फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि इधर ही मतलब 18,090 के अराउंड ही ओपन होने वाला है, क्योंकि ह्यूज पुट राइटिंग पोजीशंस बनाया है मतलब प्रॉप डेक्स और FIs मिलके, तो they will be taking the market up finally. अगर फ्लैट ओपन होता है या नीचे जाता है, then it's a very very nice opportunity for the option buyers to go long. Okay, otherwise I would suggest wait, have patience, you'll get your chance. Okay, yeah, so अगर आपको कोई questions या है तो आप प्लीज बताइए. Okay, so that's a very nice one. तो यही है, मतलब मेरा सेटअप तो बहुत ही सिंपल है, और ये जो इंडिकेटर्स है आप मतलब देख सकते हैं कि इधर स्कोर बढ़ रहा था, और फिर ये जब गैप क्रिएट हो जाता है तो फिर मतलब ये निफ्टी फिर ऊपर जाता है, तो रेड वन इज स्कोर एंड निफ्टी इज ब्लू. तो हाँ, और उसके बाद तो मार्केट मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट था, तो स्कोर भी वही इंडिकेट कर रहा था, और फाइनली मतलब जंप हुआ क्योंकि पुट राइटिंग पोजीशंस क्लोज नहीं हो रहा था, कॉल राइटिंग क्लोज हो रहा था. तो इधर टुडे ऊपर जाने वाला था, नहीं तो मतलब कल 18,000 के ऊपर गैप अप होता, तो और कोई चांस नहीं था, मतलब नीचे जाने का चांसेस नहीं था. तो यही है सारे अपडेट्स. और बैंक निफ्टी का भी वही है कि बहुत टाइम से मैंने लैपटॉप को ऑफ नहीं किया है, स्लो हो गया थोड़ा. हाँ, तो बैंक निफ्टी का भी वही है कि मतलब पहले क्या था कि स्कोर मतलब थोड़ा डिक्रीज कर रहा था, और फिर मतलब स्कोर इधर से मतलब रिकवर करने लगा था, और फिर बैंक निफ्टी ऑल्सो स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम देयर, एंड देन ऑल्सो लाइक बैंक निफ्टी वॉज flat, and finally like after recovering here then bank nifty was almost flat. Okay, so that's the thing. So मतलब यही देखिए कि बैंक निफ्टी 41,500 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कल. बैंक निफ्टी का भी मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलना चाहिए ये जोन पे, और निफ्टी को भी. तो शायद मतलब कल या परसों थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है आप लोगों को, क्योंकि इन लोगों को भी मतलब कॉल राइटिंग पोजीशंस अभी भी क्लोज करना है. तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है. और अगर ऑप्शन चेन में जाएंगे आप, तो इधर देख सकते हैं कि 18,000 पे ये जो आपका चेंज इन वाई मतलब बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप इधर देखें तो चेंज इन वाई बहुत ही ज़्यादा है पुट राइटिंग पोजीशंस.
और कुछ पुट राइटिंग 18,100 पे किया गया है, लेकिन मोस्टली 18,000 पे है और उसके नीचे है। तो अगर आप कल मतलब या पोजिशनल कुछ कल भी लेना चाहते हैं पुट राइटिंग पोजिशन, सो गो एट सेफ प्लेयर्स लाइक इफ़ यू वांट टू गो, मतलब बहुत सेफ जो है वो 17,800 है, क्योंकि ये जो 17,846 पे सपोर्ट मिलेगा। तो मतलब जो बहुत ही सेफ, मतलब दे वांट टू टेक 1 to 2% ईच वीक, I mean with their capital. So for them I would suggest 17,800, okay, which would be very safe. अभी तो 38 रुपीज़ प्रीमियम है, लेकिन कल सुबह अगर गैप अप हुआ तो ये 30 से नीचे आ सकता है, तो still you will be able to get 1% if you are taking short positions with hedged, okay. सो अगर हेजिंग करते हैं तो आपको मतलब मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो अगर इफ़ मार्जिन रिक्वायर्ड इज़ 1.2 lakhs or 1.5 lakhs, then it comes below 40,000 or sometimes below it's almost like below 40,000 or below 35,000, okay. So the thing is that yes, like that you can go for even 2%, because here the put writers would be almost safe. एंड येस 18,000 तक आप ले सकते हो, लेकिन हाँ मैं आज 18,000 पे शॉर्ट पोजीशंस लिया हूँ, पुट राइटिंग पोजीशंस लिया हूँ, एंड माय एवरेज पुट राइटिंग पोजीशंस ये जो है वो 102 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 102 के आसपास है। तो मेरा जो एवरेज प्राइस है शॉर्टिंग का, तो एंड हुआ है 99 पे, और हाँ, और जो है कि मैं हेज किया हूँ 17,500 और 17,700 से, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा दूर जाके हेज किया हूँ, क्योंकि मुझे मैं मतलब श्योर था कि मतलब बड़े प्लेयर्स भी शॉर्ट पोजीशंस लिए। जब मैं श्योर नहीं होता हूँ तो थोड़ा करीब आके हेज पोजीशंस बनाता हूँ। अगर सपोज इफ आई वाजंट श्योर, देन आई वुड बी मेकिंग माई hedging positions at 17,900 or 17,850 at most, okay. But since I was sure, so I went for some hedging positions at 17,700 and 17,050. Okay, so let's see what happens tomorrow again. So if you have any questions, I think I have discussed everything. I am highly confused in futures live market. You see, yes, this is like, even it took me a lot of time. Even now also sometimes some data I have to like मुझे मतलब फेंक देना पड़ता है। फेंक देना का मतलब I keep it aside, like कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि कुछ डेटा जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग आता है, ठीक है। एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हो, आप एक अप्रॉक्सीमेटली, मतलब फ्यूचर्स जो एनालिसिस है ना, वो आप मतलब ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है वो भी मतलब दैट इज क्वाइट, आई मीन यू कैन हैव सम रिलायबिलिटी, बट फ्यूचर्स का जो एनालिसिस है that is one of the toughest, okay, because it took me sometimes to figure out everything, but still now also if somewhere I am not sure, I just exclude that data, okay. So that happens till now also. You can't exactly like say that all these positions are this and this. आप वैसे नहीं बोल सकते, एक approximately आपको पकड़ना पड़ता है। हाँ, तो यही है कि मतलब फ्यूचर्स में आपको क्या मिलता है, मतलब वॉल्यूम मिलता है, ओआई मिलता है, और जो प्राइस है वो मिलता है, ठीक है। तो यही है कि मतलब आप जस्ट वॉल्यूम और प्राइस से ही मतलब आप ओआई और प्राइस से ही मतलब कुछ कर सकते हो। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ा और ओआई बढ़ा, तो इफ प्राइस इंक्रीजेज ओआई इंक्रीजेज, देन फ्यूचर्स लॉन्ग, बट आई यूजुअली लाइक डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज again you can be fooled by that. So again I take the help of volume, and जैसे मैंने आज ऑप्शन चेन का भी डेटा दिखाया था कि अगर with respect to that OI change, volume change is very very high, then something fishy is going on, okay, because some closing, opening or whatever, like something like happened in between that, like आपको तो चेंज मतलब ओआई डेटा मिल रहा है, राइट, सो यू कैन आइडेंटिफाई चेंज इन ओआई, और वो डेटा भी आता है 3 मिनट इंटरवल में, ठीक
ठीक है, एनएससी कोई भी मतलब डेटा प्रोवाइडर को मतलब दे प्रोवाइड ओआई डेटा एट 3 मिनट्स इंटरवल। तो आप मतलब 3 मिनट में क्या हुआ, मतलब कुछ पोजीशंस अगर क्लोज करके या कुछ पोजीशंस एक्सचेंज हो गया तो वो भी मतलब आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है देन मतलब मशीन लर्निंग के साथ मैं थोड़ा आइडेंटिफाई करता हूँ कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस चेंज इन वाई इज़ वॉल्यूम वेरी हाई, देन मैं देखता हूँ कि हाँ मतलब क्या चल रहा है पीछे। तो मैं थोड़ा मतलब फिर मैं थोड़ा देखता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ कहाँ मतलब रेजिस्टेंस जोन है, कहाँ आइडेंट मतलब क्या हो सकता है। अगर मतलब आज जैसे कि ऑप्शन चेन बुलिश है तो आई नो दैट फ्यूचर्स में भी मतलब अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो आई कैन से दैट ओके दिस हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस डेटा इन दिस ओआई चेंज इन फ्यूचर्स इज़ फॉर लॉन्ग पोजिशंस। ठीक है, तो बहुत सारे सिचुएशंस के ऊपर डील करके मतलब फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ। तो ये आप मतलब बहुत बार देख चुके हो कि ट्विटर पे मैं लाइव डालता हूँ कि क्या फ्यूचर्स में हो रहा है, दैट एग्जैक्टली शोज अप इन द एंड ऑफ द डेटा। बट ये मतलब उतना भी आसान नहीं है करना, सो आई कैन टेल यू दैट। बट येस आई ट्राई माई बेस्ट, सो दैट्स द थिंग। मतलब इधर क्या है कि मतलब क्लाइंट्स लोग भी पोजीशंस बनाए रहे, तो वो ओआई चेंज में क्लाइंट्स लोग भी प्रेजेंट है। अब उधर आप मतलब बड़े प्लेयर्स को कैसे पकड़ोगे, तो बहुत मुश्किल है, मतलब इतना आसान नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं, मतलब आई ट्राई माई बेस्ट टू आइडेंटिफाई एज आई डिड इन द पास्ट। सो अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स चाहिए जो नया है वो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। और एकदम मतलब मेंबर्स लोगों को जैसे अपडेट मिलता है तो वैसे अपडेट के लिए आपको दिस इज़ अ क्लोज टेलीग्राम ग्रुप, सो मेंबर्स के लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और आई मीन दैट्स द थिंग। ओके, सो yeah, so I think I have answered all your queries. So if you have anything to ask, you can ask, or otherwise we'll end it here then. Okay then, good night. So thanks for watching, and keep watching and keep learning and treat safely.